I, Amratnar Kaur Sandhu, welcome you all. Today, in this modern world of complicated relationships, spirituality is something that helps us to connect and understand our relationships better with ourselves and with others. To understand this concept of spirituality better, today we have with us Shri Narender Malhotra, who is widely known as your spiritual companion. He is a retired government officer cum magistrate who talks about scientific spirituality without any fake or pseudo ritualism or exorcism. He strongly professes himself as spiritual scientist and as a motivational speaker. I welcome you, sir. Thank you, madam. Thank you very much. It's really very delightful that you being so busy with different channels, being anchor and host, has spared such a time to have some questions regarding spiritual insights. And it's, as you have presented it very beautifully, that how spirituality can help in maintaining better relationship with society at large and with ourselves. It is something which is being felt by everybody, but you have presented in such a nice way, and I will feel highly encouraged to convey this message of spirituality through you to the society at large, to the best of my knowledge, efforts, and whatever can I do. Please go with your questionnaire. Sir, first and foremost, our audience would like to know what, according to you, is spiritual realization? Spiritual realization is a realization of spirit in our body. You see, madam, this is our anatomical body. This is our medical body. This is our pathological body. This has this definition, widely known. You are seeing me, I am seeing you, and everybody. Parallel to this body, you will be surprised to know that there is an astral body, which is also called ethereal body, which is also called causal body, absolutely parallel to this body. This body is connected with pathological and anatomical body at 7 centers, which are called spiritual centers, spiritual chakras. That is the spirit inside us, where this spirit is residing, where this conscience is residing, where this soul is residing. It is known as Atma. Sharir 7 जगहों पर आत्मा से मिलता है. Okay. These 7 centers are crown center on the top of the body, then Ajna, third eye center, then there is one center at throat level, then one at his heart level, then what is at navel level, then one is at a bit 2 inches above the body, and the last one is the root center, which is where we are sitting over. So during meditation, through meditative practices, this presence of the spirit, conscious or soul or Atma gets awakened, and the impact of that spirit is supplied to our this anatomical body, to this mind. This realization of the existence of an Atma, of a spirit or a soul is called spiritualization, realization. Realization of the existence of that spirit, आत्मा का हमारे शरीर में कहाँ वास है, इसकी क्या प्रक्रिया है, ये कैसे होती है, इस प्रक्रिया को spiritual realization कहते हैं. और उसकी ladder है, उसकी सीढ़ी है, meditation. We shall be coming to this aspect of the topic later on. So, if it is so, then what is the difference between spiritual realization and self-realization? Very good question, madam. Very analytical question. Very good inquisitiveness and insightful question from spiritual angle. Spirituality is a university. University has so many disciplines.
it has economics, it has mass communication, which is your discipline, history, chemistry, physics. Self-realization is one subject. I am going in for chemistry department, I am going in for mass communication department. Then self-realization is that particular search in the vast university that you want to go ahead on this. But I will like to say that at many places these are coincidental. At many places these mix with each other. Spiritualizations lead to self-realization. Self-realization further motivates for your further growth for spiritualization. And spirituality contains so many other fields of knowing about the future and knowing about the society and the universal consciousness. Many disciplines are there which are generally available in university. So this is the major difference between both. Self-realization is just knowing about a particular individual's pursuit of knowledge, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मैंने जाना कहाँ है, मैंने करना क्या है, ये जो खाना पीना है, पैसा कमाना है, ये जो गृहस्थ चलाना है, बच्चों को पालना है, ये तो सब कर ही रहे हैं. इसके अलावा क्या है, ये कि मैं पहले क्या था, मैं अब क्या हूँ, मैंने आगे क्या करना है, क्यों मेरे सामने डिजीज़ आ रही हैं, क्यों मेरे सामने क्राइसिस आ रहे हैं, क्यों मेरी फैमिली ग्रो नहीं कर पा रही, क्यों हमारी एक लेवल से ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं डेवलप कर पा रही, क्यों सोशल रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रहे हैं. All these things are contained in spirituality, and in particularly when an individual deals with spirituality from this point of view, then the self-realization chapter comes in forefront and to the fullest expression, which replies all his questions and does not leave any question unreplied, unanswered. I have said something very big, but I stand true to it. As madam, you have well defined myself as a spiritual scientist, I will deal the things in a spiritual manner, and that too in a scientific manner. So as we all know, we have 5 senses that are touching, feeling, smelling, hearing and feeling. So after spiritual realization, do these all 5 senses act any different, or are they same? Absolutely different. Absolutely different. How, sir? Now the senses of touching, listening, seeing, etc. are dealing with the external world. You are listening to me, I am speaking, you are listening to that. I am speaking as an anatomical body, my mind is at work, my mouth is at work, and this sense is acting like that. When there is spiritualization, there is internalization of these senses. Spirit will talk to you. Okay. Through your same ears, they will convey you the message. You will see the spiritual scenes. This your mind, which you close your eyes, is a black screen. Well, this screen will start working like a TV screen or like a screen of a movie, and its colors will change, its scenes will change. You will be, first of all, dive deep into the ocean and the sea of surprises. What is happening with me? The life was so okay with my general routine, and what has come out to be before me. All these 5 senses will have its internalization, and after the awareness, after the enlightenment, and after the consciousness of the spirit, which is called superconsciousness, same 5 senses will guide you, because you will have a dialogue with the divinity. So sir, since this spiritual world seems so exciting and mysterious, is it easy to achieve it? Actually, everything is easy and at the same time very difficult. You have qualified your subject, you must have undergone studies for at least 20 plus years. Right. So it was very difficult to devote yourself for 20 years to achieve a degree. I will ask you just to devote 1 year, 15 minutes in the morning, 15 minutes in the evening. Continue for 1 year, and you will see yourself as a completely transformed personality. You are Narender, madam, and the
characteristics, ingredients and properties and tenets will be absolutely transformed to a new self, which will first surprise you and equally surprise the people around you. You are not the same person, something different is there. So take it easy and don't go into the longer things. Just do it 15 minutes in the morning. Even if you are driving a car, आजकल तो म्यूज़िक बड़े अच्छे आ रहे हैं, उनको कान में लगा लीजिए और बी मेडिटेटिव. बड़ी टेक्निक्स हैं. आई विल बी टेकिंग अप वन अदर वाइल यू आर मूविंग इन ए ट्रेन. सो टेक इट इजी एंड स्टार्ट, नॉट समथिंग एज एन अपहिल टास्क कि हिमालय पे चढ़ना है. बाकी जब आप शुरू करोगे तो वो हाथ बढ़ाएगा परमात्मा और आपको ले जाएगा वहाँ. उस पर यकीन रखिए, ये आपका एफर्ट नहीं है. आपने पहला अटेम्प्ट किया तो उधर भी एनरोलमेंट हो जाती है कि some person on the earth has started knocking my doors and the God acts according to their plans. No problems. So you're saying one step at a time. Absolutely. Just start one. Okay, sir. So my next question to you is, they say that spiritual realization fills one with inner quality, finer qualities. So what are these finer qualities? Here, madam, my input is as a spiritual scientist, which I have been confessing myself, assessing myself and professing myself to be, कि what are the inner qualities which are developed and in this corporate world of universal industrialization, global business scenario, corporatization, and in such a scenario, certain qualities one feels that I must have in order to compete with others, and certain disqualities I am supposed to win over, like jealousy and anger and all that. And I must fill myself with a higher degree, higher sense of, higher level of optimism, etc. So, how to develop these positive qualities and how to cause to disappear these negative qualities, how to remove these negative qualities from your personality. Okay. Let me come to it. This, to my mind, will provide a big relief to the entrepreneurs, computer professionals, IT sectors, corporate professionals, and new young students whose brain is exposed to the maximum thoughts, and as per Western analysis, American scientific analysis, their brain is facing 20 to 40 cycles per second. एक सेकंड में उनका दिमाग 20 से 40 झटके खा रहा है. Okay. Such a vast and mammoth and huge interaction is of their brain due to being in IT sector, due to being in corporate sectors. और मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं कि ये साइकिल क्या है. 20 से 40 सेकेंड, 20 से 40 साइकिल से 1 सेकेंड का मतलब ये है कि 1 मिनट में आपका ब्रेन 1200 बार हिलता है ऑन द लोअर साइड. और अगर आप और सीनियर पोस्ट पे हैं तो वो 2000 और इससे भी ज़्यादा. और आपके माइंड की कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि इतने स्ट्रेस लेवल को आप टॉलरेट कर सकें. इसलिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, हार्ट डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट सब ओवरबर्डन्ड हुए पड़े हैं और संख्या बढ़ती जा रही है. बेड नहीं मिलता, रिजर्वेशन लेनी पड़ती है. Now I come to the main topic, that how to develop these qualities. Okay, I have talked about an astral self, which is connected with this anatomical self at 7 places. And these 7 places of top of the head is crown chakra, then Agya chakra, Ajna, third eye center. Then there is a center in the throat that is called Vishuddha in Hindi, throat that is called Vishuddha. Then there is a heart, there is one center at heart that is called Anahad, that is one center is navel, that is called sacral center. Then lower center is Swadhisthana chakra.
Navel center is called solar plexus, Okay. and sacral sector is in Hindi is called it is Swadhisthana chakra, and that is root chakra, then the lowest. Okay, madam, activation of these chakras. Heart chakra will develop in you compassion, sympathy for others, empathy for others, will give you an insight into seeing into the problems of others in a far better manner. At this time, this insight is in everybody, but at a bit raw level. कुछ लोग extraordinary हो सकते हैं. Then it will be turned into from raw to rare. एलोक्यूशन की आपको प्रॉब्लम आ रही है, एलोक्यूशनिस्ट आप अच्छे नहीं सोच रहे कि मैं एलोक्यूशन में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये जो थ्रोट सेंटर है ये बना इसलिए है. एंड दिस थर्ड आई सेंटर which we develop with the help of a meditation technique called supermind meditation, and you will be at most surprised to have a first glimpse into your destiny. मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ आपके साथ, कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ. For the first time in your life you will have a glimpse, a peep into, a look into, insight into your destiny. Your destiny will give you a reflection through divine flashes, through divine visions. आप कहाँ खड़े हो और आगे क्या होने वाला है. अब जो ऑर्डिनरी विजन है, इसी तरह से एवरी सेंटर हैज इट्स क्वालिटीज. मैं इसमें डिटेल में यूँ नहीं जाना चाहूँगा कि नेट पे अगर आप मारेंगे ना 7 स्पिरिचुअल सेंटर्स विद इट्स क्वालिटीज, सारी डिटेल आ जाएगी. टू कट इट शॉर्ट, after spiritual realization, after the realization of the spirit that exists with you, and activation of chakras through meditations which we prescribe, these qualities start developing in you. And if you are every corporator, every entrepreneur, every businessman, every layman in the society, every home is facing the problem of jealousy, anger, competition, and trying to convince them कि नहीं, I am not jealous, नहीं, I am not angry, नहीं, एंगर मिटेगा, जेलसी मिटेगी, कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगी, एक प्रक्रिया से मिटेगी. और उस प्रक्रिया का नाम मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है. आनंद, एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट आप इस बॉडी में ढूंढ सकते हो. शांति की खोज के लिए तो उधर जाना पड़ेगा, 5000 साल पहले से लिखा हुआ है. शांति की खोज, स्थायित्व की खोज इधर नहीं मिलेगी. So in coming discussions we will be coming to it कि how to remove jealousy, how to be comfortable in the situation which is just creating a hell lot of problem in your personality out of jealousy. Jealousy तो आपको होनी ही होनी है. ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला कि jealousy नहीं होगी. Okay. आपकी कार 10 लाख की है तो जो 15 लाख की ले आया, तो फर्स्ट रिएक्शन ही जेलस रिएक्शन है. उसके बाद आप ऑटो सजेशंस दोगे, सेल्फ काउंसलिंग करोगे, वगैरह वगैरह. So I will talk about in a very concrete terms कि how and which meditational technique which activate in you, that is this is called solar plexus center, navel center. And madam, please listen carefully, and the audience who is listening carefully, I will like to tell them that after activation of this center through joy abundance meditation, the waves of happiness and optimism and freshness will rise from this center and will convey to that mental faculty, that faculty of the mind where jealousy is working, and it will wash it away in the similar manner and similar way as if a dust is frozen on your windscreen of the car and you start wiping blades, and when it is wiped the screen is absolutely clean, and you will see yourself that how the jealousy is being treated by way of meditation and by way of spirituality. So we shall be coming while we discuss the techniques of the meditation in detail. So rest assured that rising of jealousy and anger are spontaneous with human mind. And the solution to counter it never lies in having a drink of liquor or forgetting yourself in a dance club or
taking some other measures, listening to song and inspirational song, those things also matter a lot. I will not undermine their importance at all, but the permanent solution will lie there. And the person whosoever comes to you with having an enjoyment of sense of jealousy, you will appreciate his or her achievements to the extent that he will feel upset that the desired effect has not come. So these are all scientific things, and I will be coming to all these things dealing in a scientific manner by and by. Very well said, sir. So last question that comes to my mind is about consciousness. What according to you is super consciousness, collective consciousness, universal and cosmic consciousness? Oh, really, very exhaustive question and a very relevant question. You see, madam, this anatomical body is being governed by mind, brain. Let me explain the two things. Brain is that physical part situated here, and mind is that part which is giving directions to the brain and body. This is general syndrome, phenomena, what is happening with everybody in the society. In meditation, particularly in supermind meditation, this mind is transformed into supermind. Okay. This supermind is situated in this third eye center, जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, उसके बिल्कुल ठीक forehead के पीछे. Okay. इधर माइंड है, उधर सुपरमाइंड. इसी तरह से हमारे सब है. इधर हार्ट है तो उधर हार्ट चक्र है, इधर गला है तो उधर गले का चक्र है, इधर स्टोमक है तो उधर नेवल सेंटर है. पैरेलल बना रखा है ये. Okay. आप बिल्कुल क्लियरली नेट पे देखोगे, एक क्लिक में बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, आप देख लो. So through meditation, this mind is transformed into supermind, and that supermind has this quality of super consciousness, connectivity with divinity, with God. आपका divinity के साथ dialogue establish हो जाएगा. अब ये भी मैंने एक जो बात कह तो दी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा आ गया. भाई यार, कोई हाई फाई सा आइडिया तो है, लेकिन कुछ समझ. तो मैं आपको एक महाभारत का उदाहरण दे देता हूँ. उससे ऑर्डिनरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस के बीच का फर्क बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आपने महाभारत देखी, भीष्म पितामह का वध किया, टीवी पे आई है. अर्जुन ने वध किया, शिखंडी सामने खड़ा हुआ, और कृष्ण भगवान सारथी थे, सामने भीष्म पितामह थे. भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान ले रखा था. उनकी इच्छा के बिना उनको कोई मार नहीं सकता था, और यह भी उनका वरदान था कि जब तक उनका धनुष नीचे ना हो जाए कोई नहीं उनको मार सकता. ये भी उनको उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी महिला पे हाथ नहीं उठाऊंगा. शिखंडिनी महिला थी. Okay. शिखंडिनी पूर्व जन्म में अंबा थी, जिसका राजहठ में और अहम के कारण, अपने इगोइस्टिक इंपल्सिस और राजहठ के कारण भीष्म पितामह ने अपहरण किया था. क्योंकि हस्तिनापुर में उनकी लड़कियां ब्याही जाती थी, उनकी राजकुमारियां ब्याही जाती थी, तो उन्होंने स्वयंवर रचा था. तो भीष्म पितामह ने उन पे अटैक किया था और वो अंबा का अपहरण करके लाया. तो अंबा का अपहरण करने के बाद अंबा ने भीष्म पितामह को बताया कि भाई मैं तो अपना वर चुन चुकी हूँ. तो उन्होंने उसको भाई चलो, घर के बड़ों ने समझाया, तो वो उसके पास, राजकुमार के पास गए कि भाई इसने आपको वर मान लिया है. कहता है मैं इस तरह से परित्याग की हुई, अपहरण, जिसका अपहरण किया गया है, ऐसी युवती को मैं अब अपनी राजकुमारी को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहूँगा. उसका ईगो हर्ट हो गया. अंबा ने उसको कहा कि अब मेरा से विवाह कर दूँ. उसने कहा अभी मैं तो अविवाहित रहने का प्रण ले चुका हूँ. उसकी उसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी. उसने तपस्या की कि मैंने भीष्म से बदला लेना है. अब मैडम उस भीष्म, उसके तपस्या में उसका एक जन्म बीत गया. One life span was spent and then another she took a short birth, और ये उसका तीसरा जन्म था. अब जब वो सीन हुआ, जब शिखंडिनी बनके वो अर्जुन के सामने और भीष्म के बीच में आकर खड़ी हो गई, तो अर्जुन की ऑर्डिनरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ही वाज इक्विप्ड विद ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड. उसने आर्ग्यू किया कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं औरत के पीछे से युद्ध नहीं करूँगा, मैं लड़ाई नहीं करने वाला, मैं, ये मेरे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है. उसने अपना धनुष नीचे कर दिया, आर्ग्यू किया,
और कृष्ण भगवान बहुत गुस्से हो गए, उन्होंने कहा भी इस पे अटैक कर, नहीं तो मैं अटैक करता हूँ। कारण श्री कृष्ण भगवान सुपर कॉन्शियसनेस से इक्विप्ड थे, भगवान थे, ईश्वर थे। और सुपर कॉन्शियसनेस से जब वो इक्विप्ड थे तो वो अम्बा के पिछले जन्म और उससे पिछले जन्म को भी देख रहे थे। भीष्म जो उनके परम शिष्य थे, लेकिन अहम वश उन्होंने बुरा कर्म किया था, राजहट वश, तो उसको सजा भी देनी है। हाँ जी। सारी स्टेज उन्होंने सेट कर दी और अर्जुन को कहा बाण चला और मार दिया। ऑर्डिनरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के तर्क देखिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा वगैरह, और सुपर कॉन्शियसनेस के तर्क देखिए, 15 मिनट के युद्ध में उन्होंने 3 जन्म की कहानी निपटा दी। ये विजन आपका जो सुपर माइंड है, ये विजन आपको दे देगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स और हर एक आदमी की सारी प्रॉब्लम्स ये हैं कि वो ऑर्डिनरी माइंड से डील कर रहा है। ऑर्डिनरी माइंड सिर्फ टाइम के इस एस्पेक्ट को डील करता है, सुपर कॉन्शियसनेस टाइम के 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को डील करता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दिस इज द मेन डिफरेंस। इट हैज सो मेनी डायमेंशंस, वी शैल बी कमिंग अप टू दैट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड कि व्हाट इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, सबकी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, रिचुअलिस्टिक है कि हमने सुबह मंदिर जाना है, हमने शंकर भगवान पे जल चढ़ाना है, हमने गीता पढ़नी है, रामायण पर, जो भी उनके वेद पुराण, जो भी उनके आदरणीय ग्रंथ हैं, ये उस धर्म की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हाँ जी। इसी में वो मूव करते हैं। हाँ जी। 1 करोड़ हो सकते हैं, 2 करोड़ हो सकते हैं, 3 करोड़ हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ओके। अब मैडम स्पिरिचुअलिटी में, सुपर कॉन्शियसनेस में, अगर एक इंसान एक धर्म से बिलोंग करता है, उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को कैरी ऑन कर रहा है, उसकी अपलिफ्टमेंट हो जाती है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाता है। उसके लिए वो धर्म विशेष नहीं रह जाता, सारा यूनिवर्स उसका अपना हो जाता है। वो उस 2 करोड़ के जो था उसका ग्रुप, उससे बाहर निकल के अनंत में फैल जाता है, करोड़ों में फैल जाता है। उसमें जोरोस्ट्रियन धर्म भी आ गया, हिंदू भी आ गया, मुस्लिम भी आ गया, सारी ह्यूमैनिटी आ गई। क्योंकि सुपर कॉन्शियसनेस लीड्स टू सुप्रीम लव। उसकी डेवलपमेंट देख रहे हैं। हाँ जी। उसके माइंड की सुपर ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ सुपर कॉन्शियसनेस में। सुपर कॉन्शियसनेस उधर अगर किसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर देता है। उसके सामने सारी दुनिया के सारे नक्शे उभरने शुरू हो जाते हैं। और फिर इससे भी आगे देखिए जरा, सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसमें प्लैनेट्स आ जाते हैं, गैलेक्सी आ जाती है। एस्ट्रोलॉजी में वो कैलकुलेशन से बताते हैं कि अब ये शनि आपको नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। हाँ जी। आप जब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं तो वो सारा नक्शा भी सामने आ जाता है। लेवल्स हैं, दीज आर लेवल्स, एंड वर्टिकल ग्रोथ, वर्टिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ ए ordinary human consciousness from human consciousness mind to cosmic consciousness mind। आप हैरान रह जाएंगे कि सारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स का पार्ट है, इस आपकी बॉडी का पार्ट है। वी शैल बी कमिंग टू दीज टॉपिक्स इन डिटेल्स बिकॉज एवरी टॉपिक रिक्वायर्स ए लॉन्ग डिस्कशंस। वी शैल बी कमिंग टू इट बाय एंड बाय। इन ब्रीफ इट इज देयर। So that was very insightful for me and of course for our audience also. So I'm very thankful to you that you came here and joined us and gave this part of your knowledge to us. So I have learned a lot. I have learned a lot. Thank you. Our audience must have learned a lot. Okay. So I hope to connect with you soon again so that we can learn and grow together. Thank you, madam. Thank you. Thank you.